Hello, everyone. Very good evening to all the students who have joined with me right now. And do give a plus one in the chat box if you're listening to me and you have solved all the three problems in the context. Okay, yes. Uh, Nipun could solve all the three problems. That's very great. So this will be analysis of the GFG Weekly Coding Contest. So let me give you a brief introduction about myself. My name is Gourav Shaw, and I am presently working as a mentor as well as a software engineer intern at GeeksforGeeks. Okay, yeah. And if I'm properly audible and everything is proper, do let me know so I will go ahead directly to the uh, analysis of the questions. Okay, I'm sure you all can see my screen. Okay, so let's move to the problems first. Okay, so this is the first problem. Let me refresh the page and see how many of you all could solve. Okay, so I see there are 4,000 submissions for this problem with an accuracy of 80% almost. This is quite an easy problem actually. So anyone in the chat box who would like to say what approach did they follow while solving this? Third problem, I used n into len plus 26 square for fourth YTLE. Okay, we'll look into it YTLE. It must be with the constraints actually then. N of length into 26 square. Weren't there four questions? Yes, there were four questions. Abhinabha, there were four questions. The last one was a little bit difficult problem because it was a proper CP level problem and not somewhat DSA. There were a few observations. For first problem, I used a stack. Stack was an overkill actually. It's a very simple problem. Just keep a counter and add or subtract one with each step. Yes, exactly, Rakesh. This is how we will be doing it. I use GCD for fourth one for finding K. Yes, Midipak. Actually, GCD is a part of the answer. Question two, I'm getting TLE. Okay, we'll have a look into it. Iterating the vector of strings and conditions. Iterating the vector of strings and conditions. Okay, got it, got it. We about the first problem, she's right. Okay, cool.
Okay, I'm really, really sorry. Actually, mm, mm, I think I spoke for the last 3-4 minutes. Okay, so basically, how long was I not audible? Can anyone please mention? Really, really apologies for this small problem. I'll once again explain it to you all. No worries. Yes, Pranav, you are actually correct. Okay. So I was saying that. So let me explain the problem once again. Whenever you are using terminal, you see, right, you move from one directory to the another, right? So if you are at a present directory and you move to the next directory becomes your child directory. So basically, if you are moving one step ahead, you are going to your child directory, and if you are moving one step back, you are coming back to your parent directory. So if there are, let's say, five directories, one, two, three, four, five, and your present directory is at position number five, then your parent is the directory number four. So basically, you're given this particular a string. You're given a string, okay, and you have to say the total number of moves that you are taking while you are iterating across all the actions give mentioned in the string. If this particular action is mentioned, you move to the parent. If this particular action is mentioned, you move to the you stay in the current folder. And if this particular action is mentioned, then you move to your child folder. Okay. So you have to ask the total number of moves. So since the constraints are pretty simple, up to 10 to the power 5, we can expect a linear time complexity to solve this question. Linear time complexity will solve this question. Okay, let's have a look. Hmm. After I switch tab. Okay. Um, hmm, hmm. Really sorry for the uh, flight issue. I hope everything is proper till now. Okay. So I wrote in the Jamboot the yeah. So let's have a look at the slides. So basically, what's happening here is that if this particular string is given, then you go to your parent, and if this particular string is given, then you stay, and if this particular string is given, you move to child. Moving to child means one step ahead, and going to present mean one step back. So all you have to do is keep a counter. Okay, let's say the counter is answer, and if that particular string is equal to the one mentioned where you are going back to your parent, you do answer minus minus. And if it means that you are going like you are staying where you are, so all you have to do is keep a continue, and finally do a answer plus plus. Okay, so this is how we will be solving this particular question. Okay, and this was a pretty simple question. Time complexity will be linear, and since it's 10 to the power 5, so linear time complexity will very well work. Okay. I hope everyone is very thorough with this problem. I guess most of you have got this problem correct. Okay. So I guess I don't think there are any other problems in this particular code. So let me just submit this, and let me just comment these out. Right. Around 80% people have actually solved this question. So I believe that this was a pretty simple question, and the explanation is also very well. So let me submit this. Okay, cool. I don't think anyone will have doubt in this problem. You can do it by stack also, but using a stack is basically using extra space, right? And you don't want to take up extra space. So keeping the space complexity as constant, this can be a good interview problem as well. You can just simply put a counter, which is basically an over for operation. Okay, very well. And let us move to the next question then. Okay, do a plus one in the chat box if you are here with me till now, and we will move to the next question then. How many of you all could solve the second question? You know, this seems like an easy problem, but you guys must have gotten a TLE error or a runtime error or maybe an overflow error,
or maybe you could have also got some like integer overflow error is very common in this problem, because the constraints is somewhat like that. Okay, so maybe some of you have forgotten to take the modulo from 10 to the power 9 plus 7. Okay, and you must have taken integer, instead you should have taken long. Okay, the most important part here is, the most important part of this problem is, you have to take long while you are solving. You have to take all variables as long while you're solving. You use recursion, use dp problem. Yeah, you can say it's a dp problem, because you are basically utilizing the previously stored values. But yeah, but just storing all the four values together will also certainly help you. Okay, cool then. I did wrote a few pointers in my slides while preparing for the session, but I don't think the explanation will require the use of slides. Hmm. But anyway, have a look into it. The question says that you are given a few initial values for a number n, right? So you are given the value for f of 0 is equal to 2, f of 1 equal to 5, f of 2 equal to 9, and f of 3 equal to 7. Okay. Surprisingly, let me once refresh this page. I think 31% accuracy with 9,000 plus submissions. Okay. Yeah. I was actually hoping that it will be around 50% accuracy, but accuracy is like people started using int, then converted into long. If you have forgotten using modulo operator, you must have done that, so that is why the accuracy is less. But overall the problem is easy. Okay, I solve it using int. Okay, let's say you are given an integer n, and dp problem o of n space complexity is o of 1. Yes. Hmm. Actually, space complexity will be O of n. So in fact, some people must have taken an array DP array and stored all the values from 1 to n. Okay, then in that case, the space complexity would have become O of n. But if you observe it very carefully, we are not actually needing all the values from the previous arrays. So you can optimize upon the space and take up only those values which are necessary, which is basically the last four values. Okay, so once I explain this problem, you will understand it. Can you avoid DP for this problem? Yes, I will avoid DP for this problem. Okay. Karthik is saying, bro, tell me what should we think when these type of problems have mod constraint? Basically, mod constraints are nothing. See, what happens is that the answer sometimes overflows the integer, right? And we want to have an integer output. As you can see in this problem, we have the return type as int, and we want an integer output, right? So that is the thing that basically we are actually putting it as a modulo. Okay. So and but the concept of the question will actually take you outside the integer value range. So just to be safe, we are using modulo here. Cool. Okay. So let's move on to the explanation of the problem. I have prepared a few things on the slide, but I don't think this is necessary. Self-explanatory. We're already given four values, right? So if you remember your high school mathematics, then you could have seen that what happened is you are given a proper functional equations, and and while you're preparing, and you're given some initial values, and based upon those initial values you have to find the behavior of a particular function, or the value of a particular function at a certain position. So sounds something like that. So it says that for x greater than equal to 4, you have to basically do this particular operation. That is, take the value of f of x minus 2, multiply it with the same value, then take the value of f of x minus 4, multiply it with the same value. Okay? If x is even, this particular condition has to be true. If x is even. Now, let's say if x is odd. Okay. In that case, you have to go back one step and three step. So you have to add f of x minus 1 and multiply it with x minus 1, and then add f of x minus 3 and multiply it with x minus 3. Now we have to understand a few things here, that why we are actually doing it for x greater than equal to 4. So the value of this function f of x is such that it will only take positive values. ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है, right, कि वो सिर्फ positive values ही लेगा. Cool.
सो अब यहाँ पर क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस टू जो है, सो एफ ऑफ एक्स माइनस टू, लेट्स से इफ एक्स इज टू देन एक्स माइनस टू विल बी जीरो, बट एक्स माइनस फोर विल बी माइनस टू, राइट? सो माइनस टू के लिए हमारे पास वैल्यूज नहीं है, वी डोंट हैव द वैल्यूज फॉर माइनस टू. So that is why the general form of this function takes place only when x is greater than or equal to 4, right? So straightforward approach है, ठीक है. So from x equal to 4 onwards we will be utilizing the previously computed values for finding f of n. अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. We have f of 0, we have f of 1, we have f of 2 and we have f of 3. Okay, ये तीन वैल्यूज हैं. If you want to calculate f of 4, we can utilize these four values and compute f of 4. If we want to calculate f of 5, we can utilize these four values, the last four values. Okay. So observation here is, for every value of n, in order to compute the value of f of n, we only need okay. So we only need you have to take all variables, and in order to compute the value of f of n, we only need the previous four values. Okay. Why? If you have a look here, this function takes x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x minus 4. ठीक है. सो अगर हमें एफ ऑफ एन निकालना है तो हमें एन माइनस वन चाहिए, एन माइनस टू चाहिए, एन माइनस थ्री चाहिए, एन माइनस फोर चाहिए, राइट? हमेशा उसके चार लास्ट के चार वैल्यूज. सो देर आर मेनी पीपल हु डू समथिंग लाइक दिस. दे विल डिक्लेयर अ वेक्टर int dp. Okay, and dp will be of size n. ठीक है, जहाँ तक रहेगा dp और n plus 1. Okay, and then they will initialize all the values and keep on storing all the values from 0 to n. ठीक है, you can do like this, no problem. But the problem here is that you do not need all the values, right? You only need the four values. So instead of using a dp table or an array as such, what you do, you just simply store all the four values in four variables. ठीक है, store the last four values in four variables. ठीक है, store the last four values in four variables. Okay, and then update the values accordingly. Cool. Okay, so let us see the code then. It will make much more sense after I explain the code. Okay, yeah. The first step is to declare a modulo. Okay, declare a modulo because our problem is asking us that we have to return with this particular modulo. Make sure that you are keeping everything as long log. Okay, why long log? Because while you are computing these values of f of n, it may flow outside the integer range, right? Because you are multiplying two values of similar nature. You are multiplying f of n minus 2 into n minus 2, right? So for large numbers, it will definitely flow outside the 10 to the power 9 or the intermax range. That is the reason we have to make sure we are keeping all variables as long log. Okay. इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर, अगर ये वाला जो वेक्टर है ये अगर हम लोग लॉन्ग लॉन्ग नहीं भी लेते तब भी चल जाता, बिकॉज दीज फोर वैल्यूज आर एक्चुअली इंटीजर्स, राइट? 2, 5, 9 and 7. Okay, and what is happening? It is already given that if n is less than equal to 3, which means that
ये किसके लिए है? n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. ओके, फॉर दीज 3 वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में ये वैल्यूज आर हार्ड कोडेड. ओके, सो आई कैन सिंपली राइट दीज वैल्यूज आर हार्ड कोडेड according to the problem. ओके, सो ये हार्ड कोडेड है ये वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. सो अगर n 3 से कम है तो जस्ट सिंपली डीपी ऑफ n रिटर्न कर दो. कूल, समझ में आया ना? Now the question is, if n is greater than 3, मतलब from the number value 4 onwards. Okay, from the value 4 onwards, तो फिर how we will do it? ठीक है, तो in that case what we will be doing, we will be declaring 4 variables. ठीक है, we can actually keep this dp वाला array and keep on adding and appending elements to it, but instead just let's just take 4 variables. This will make sure that we have constant space. ठीक है, so p1 equal to 2, p2 equal to 5, p3 equal to 9 and p4 equal to 7. ठीक है, सो बेसिकली अब क्या होगा यहाँ पर? हाँ, सो तो फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू अगर तुम्हें एफ ऑफ एन चाहिए तो तुम्हें 4 से लेकर n तक जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो फ्रॉम 4 टू द वैल्यू n एंड अपडेट द लास्ट 4 वैल्यूज अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो वेल i इज इक्वल टू 4 अगर इवन है तो इन दैट केस व्हाट यू आर डूइंग p3 इंटू आई माइनस 2, p1 इंटू आई माइनस 4. वाई? बिकॉज p3 इज बेसिकली f of x minus 2, राइट? p3 क्या है? p3 is f of x minus 2. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, p4 है f of x minus 1, p2 है f of x minus 3 and p1 है f of x minus 4. Okay, so there are like 4 values. So अगर if I is even, you have to compute according to this formula. So accordingly what you do, you multiply p3 and then multiply it with I minus 2, and then you take p1, multiply it with I minus 4, and at the same time take modulo. Okay, this is important because this internal multiplication will overflow for sure. Okay, after that what you do, now once you're adding a and b, there is a slight chance again that these a plus b will again overflow. So for the same reasons you have to again take a modulo. Cool. Now after you have calculated this particular value of I, now what you are supposed to do is that you are supposed to shift the last 4 values. मतलब p1 का जो इनिशियल वैल्यू था वो अब हम लोग डिच कर देंगे. p2 का जो वैल्यू होगा वो p1 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा. सो p2, so basically what we will do, we will make sure that p1 is equal to p2, p2 is equal to p3, p3 is equal to p4, and the p4 is equal to the new value of element we just computed. So what we are doing, for every value of any particular, so जैसे जैसे हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उस वैल्यू पे वहाँ पर वो एलिमेंट पुट कर दे. Right, so we are shifting the 4 values by one space every time we are computing. I hope everything is clear till now. Similarly for odd also. Okay, similarly if we are actually having the odd element तब जाकर हम लोग ये भी compute करेंगे. Cool. And yeah, finally the value of p4. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से लेकर n तक जा रहे हैं, हमें क्या रिटर्न करना है? f of n. तो जो वैल्यू ऑफ p4 होगा, क्योंकि p4 को हम लोग एलिमेंट से सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली p4 को हम लोग एलिमेंट से सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं जब भी हम लोग n के लिए निकाल रहे हैं. सो whenever we are computing the value for f of n, we are substituting the value of p4 for f of n. So p4 is no longer f of n minus 1. ये लूप चलने के बाद p4 actually becomes f of n. ठीक है, because as we are computing at the same time we are updating the variables as well. ठीक है, okay.
and then finally we will be returning p4. So let's submit this problem, and for sure this most important. Okay, so I need to comment this particular code out, otherwise all things are nice, plain and simple. Okay. Hmm. Let me have a look at other people's submission. All submission देखते हैं. Someone wrote a Python 3 code, compilation error, wrong answer, Java, C++, correct. Okay, so someone actually wrote a TLE. Okay, let's see. DP 1E7 -1 से initialize किया गया था. Good. DP is not equal to -1. ठीक है. If n is equal to 0, return true. Okay, so this is a hard coded value. ठीक है. Else, and what to DPO. अच्छा, ये तो recursion वाला code. Okay. You are again calling this particular function. You have dp is not equal to -1, return dp. Mhm. And what is the constraints actually? Let's see. Constraint the 10 to the power 5. Okay. All submissions. Mhm. Constraints are up to 10 to the power 5, and you're using a dp. And okay, हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है ये बेसिकली इज दैट सी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना बेसिकली देयर इज अ स्ट्रिक्ट गाइडेंस बिटवीन कि देखो जब तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी रिकर्शन के थ्रू होता है. सो रिकर्शन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होता है ना वो रिकर्शन स्टैक स्पेस लेता है. एंड इफ इट समटाइम्स बिकम ग्रेटर देन 10 टू द पावर 8, सो प्लीज अवॉइड यूजिंग रिकर्शन. ठीक है, तो वो बॉर्डर लाइन 10 टू द पावर 8 वाला कम्प्लेक्सिटी वो 1 सेकंड के अंदर चलता है. सो रिकर्शन विल ऐड डेफिनेटली टू इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी मोर एंड मोर. So in that case, it's pretty sure that you should avoid using recursion in such cases. ठीक है, अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रहा है बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग द प्रीवियस वैल्यूज, राइट. और एक और चीज़ है बेसिकली इज दैट लाइक यू सी द जब हम लोग निकालते हैं फिबोनाची सीरीज, तो फिबोनाची हम लोग डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर एक और चीज़ है बेसिकली, वो चीज़ ऑब्जर्व करो इज दैट ये लास्ट के 4 वैल्यूज ही ले रहा है. ठीक है. अब अगर जब तुम रिकर्शन कर रहे हो ना तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेट्स से तुम n के लिए कर रहे हो, वो n के लिए निकालेगा, n-1 के लिए n-2, n से लेके पूरा वो 1 तक का रिकर्शन ट्री बनाएगा ही, राइट. ये थोड़ा इमेजिन करके देखो. If you are doing a recursion, it will start with n and it will keep on doing till the value जब तक उसको एक बेस कंडीशन नहीं मिल जा रहा. ठीक है. बट हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे इटरेटिव लूप में हम लोग स्टार्टिंग से आ रहे हैं. ठीक है, हम लोग 4 5 6 ऐसे करके कंप्यूट कर रहे हैं और उसके लास्ट के 4 वैल्यूज ले रहे हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा. So that is the reason this is giving you TLE. Okay, let's see other submissions. रन टाइम एरर का देखते हैं. ओके, रन टाइम एरर. Debugging other people's code is somewhat actually difficult. Hmm. हाँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम हुआ होगा. देखो ये जो i-2 है ना, देखो यहाँ पर i का वैल्यू 4 है. ठीक है, तुमने क्या किया, इंट i किया है, राइट. तो i इंटीजर है और ये लॉन्ग लॉन्ग है, तो यहाँ पर बेसिकली इंटीजर इंटू लॉन्ग लॉन्ग तुम्हें थोड़ा टाइप कास्टिंग यहाँ पर करना पड़ेगा मॉड्यूलो के लिए. ओके, बट डीपी ऑफ i-2 इज ऑलरेडी लॉन्ग लॉन्ग. सो यहाँ पर 1 ll ऐड कर देना, बट दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. डीपी ऑलरेडी लॉन्ग लॉन्ग डिक्लेयर्ड है. ओके, इफ n इक्वल टू 3 देन सेगमेंटेशन है ना. और नेक्स्ट सबमिट हो जाता है वही कोर्स, समझ नहीं आता कैसे होती टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन कॉन्टेस्ट में.
Yes, Arman is actually right. Hmm. Cool. So let's move to the next problem then. Huh. So this is actually a very interesting problem. Okay. Uh, Coin mining pattern. So let's do a plus one in the chat box जिन लोगों ने ये problem solve कर लिया. This is actually a easy problem once again, and 26% accuracy है इसका भी. Okay, and submissions 3000 submissions. So if you are actually aware of the concepts of graph, in that case this problem can easily be solved. Okay. So इस question में क्या है? You are given mine of points of size n into n. ठीक है, तो each cell has an integer representing the number of points in that cell. And so let's say यहाँ पर लिखता हूँ मैं 103, उसके बाद है 501, उसके बाद है 012. ओके, सो यहाँ पर लाइक तीन थ्री ये हमारा अरे है, राइट. तो बेसिकली गीक स्टार्ट फ्रॉम एनी वीक सेल. ठीक है, कोई भी वीक सेल से स्टार्ट करेगा, और डेफिनेशन ऑफ अ वीक सेल भी दिया हुआ है. वीक सेल का डेफिनेशन हो गया इफ़ आई प्लस जे मॉड्यूलो. अच्छा, इफ़ आई प्लस जे इज़ ऑड. ओके, ठीक है, तो ये चेक हो जाएगा. ओके, सो इफ़ आई प्लस जे इज़ ऑड, देन इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि ठीक है. सो यहाँ पर बोल रहा है geek could start from any weak cell and he can move to one cell to the right, left, up or down, and while moving he should not move outside the boundaries. ठीक है. Also he cannot revisit any cell and cannot visit with cells with 0 points. ठीक है. तो हाँ, he can basically move, अगर किसी भी सेल में खड़ा है he can move in the 4 directions. ठीक है, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए. कैनॉट रिविजिट एनी सेल, किसी एक पर्टिकुलर सेल को दोबारा नहीं जा सकते. एंड कैनॉट विजिट सेल्स विद जीरो कॉस्ट. ठीक है. सो ठीक है, सो बेसिकली द जीरो कॉस्ट वाले सेल को विजिट भी नहीं कर सकते और जीरो कॉस्ट वाले सेल को स्टार्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है. सो हाँ, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम देयर इज अ स्मॉल कंसेप्ट हियर. लाइक ये कंसेप्ट आई होप एवरीवन नोज इफ यू आर अवेयर विद ग्राफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. फर्स्ट टेल मी, लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग एट एनी पर्टिकुलर पोजिशन आई कॉमा जे, how will you traverse across all the four cells which are top, left, right and bottom of a given cell? Okay, ये करने के लिए basically what we have to do is that we have to develop a movement array. ठीक है. So movement array, let me just show you the code. Okay. So we write something, this is a movement array, and with the help of this particular array हम लोग क्या करेंगे, traverse करेंगे all four directions. Okay. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर आइटरेटिंग अक्रॉस ऑल द सेल्स. ठीक है. सो गिवन कंडीशन ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वीक सेल से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम लोग आई कॉमा जे पे आ रहे हैं एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द वीक सेल्स. सो वीक सेल का क्या डेफिनेशन है कि आई प्लस जे मॉड टू शुड बी इक्वल टू 1. ये है. एंड एट द सेम टाइम दे शुड नॉट कंटेन अ वैल्यू 0 इन द ग्रिड आई कॉमा जे. ठीक है. अगर नहीं कंटेन कर रहा है तभी हम लोग वी कैन कंसिडर इट एज अ वीक सेल. ठीक है. इफ दीज टू कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा फंक आई प्लस जे कॉमा ग्रिड. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. ओके, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं. हाँ, सो ऐसा हो सकता है कि जितने भी वीक सेल्स हैं हम लोग सब में से स्टार्ट करके देखेंगे. ठीक है. और हर जब हमें और जिसका मैक्सिमम आंसर रहेगा वो हमारा एक्चुअल आंसर हो गया. ठीक है. अब नाउ वी हैव टू राइट दिस फंक्शन कोड फॉर फंक. ठीक है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर कोड फॉर फंक. आई हैव गॉट द कोड स्निपेट्स ऑलरेडी रेडी. हाँ, तो इफ़ यू हैव डन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च, या फिर यू हैव डन समथिंग एज
रॉटन ऑरेंजेस प्रॉब्लम, मल्टी सोर्स बीएफएस प्रॉब्लम, बीएफएस के प्रॉब्लम्स अगर तुम लोगों ने करा है, सो यू मस्ट हैव एन आइडिया कैसे कर रही है, ठीक है। बीएफएस के प्रॉब्लम या फिर डीएफएस के प्रॉब्लम, जो भी है तुम लोगों ने ग्राफ के प्रॉब्लम्स करके रखा है, सो समवॉट द कंसेप्ट इज सिमिलर, ठीक है। लेट मी सी, आई हैव रिटन अ फ्यू थिंग्स इन द स्लाइड्स हियर, उसको देख लेते हैं। हाँ, या सो दिस वाज द एक्चुअली एग्जांपल प्रॉब्लम्स, और उसका आंसर बेसिकली ऐसे हुआ था कि यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल 1, उसके बाद 2 पे जाओ, फिर 1 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हुआ था। हाँ, निपुण इज सेइंग काइंड ऑफ रैट इन अ मेज, हाँ वही है। ओके, सो हाँ, तो आइडिया बेसिकली हम लोगों ने लिख के रखा है, ग्राफ ट्रावर्सल का कंसेप्ट और रिकर्शन का कंसेप्ट लगेगा। एंड वी डोंट वांट टू ट्रैवल अ प्रीवियसली विजिटेड सेल, ये भी मेंशन्ड है। सेकेंडली, मैक्स ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम एवरी स्टार्टिंग पाथ, ठीक है। तो अगर एक वैलिड स्टार्टिंग पाथ है, हम लोग वहाँ से कोड को रन करके देखेंगे और आंसर कंप्यूट करेंगे। सारे वैलिड स्टार्टिंग पाथ से हमारे पास अलग अलग आंसर्स आएंगे, जिनका मैक्सिमम है वो हमारा एक्चुअल आंसर है, ठीक है। सो या ये तो कोड एक्सप्लेनेशन हो गया, लेट्स सी। सो दिस इज बेसिकली मैक्सिमम आंसर ले रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप है आंसर इक्वल टू ग्रिड आई जे, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन रन होगा, हम लोग एक रिकर्शन स्टार्ट कर रहे हैं उस सेल से, ठीक है। अगर ये फंक्शन कॉल किया गया है, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो आई कॉमा जे एक वीक सेल है और वहाँ से एक रिकर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और रिकर्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पोजिशन आई कॉमा जे। तो सबसे पहले हम लोग आंसर में उस वैल्यू को डाल लेंगे, बिकॉज उतना पॉइंट्स हमें मिल रहा है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आंसर। नाउ विल कीप अनदर वेरिएबल नाउ, जिसमें हम लोग ग्रिड आई कॉमा जे का वैल्यू स्टोर कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट जीरो, आई वॉन्ट टू मेक द वैल्यू ऑफ ग्रिड आई कॉमा जे जीरो, ठीक है। दिस इज डन so as to not revisit the previously visited cell, ठीक है, vessel in the present recursion tree, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, once we are at a particular index I comma j, we have to make sure that we are moving in all the 4 directions, ठीक है। ऑल द 4 डायरेक्शंस कैसे मूव करेंगे? फॉर दैट वी हैव दिस वेक्टर array, ठीक है, dx and dy. So these are basically called movement arrays, okay. So we compute the indices x comma y by doing the simple I plus equal to dx comma end, j plus equal to dy comma end, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें, एंड वी विल लाइक दिस इज अ कंडीशन टू चेक दैट दे आर नॉट फ्लोइंग आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है। दो कंडीशन चेक करने हैं, आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है, दैट इज मतलब वैलिड होना चाहिए पाथ, ठीक है। तो बेसिकली वैलिड सेल। और सेकंड कंडीशन क्या, वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज अगर वहाँ पर 0 है तो हम लोग वो सेल पे नहीं जाएंगे। अगर ये दो कंडीशन ट्रू हो रहा है, इट मीन्स दैट आई कैन रिकर्सिवली कॉल फॉर दिस वैल्यू फंक फिर से विद द न्यू सेल्स, ठीक है। और उसका मैच जो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा, हम लोग उसका आंसर मैक्साइज से मैक्सिमाइज करते जाएंगे, ठीक है। अब जब हम लोग ये रिकर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जब ये रिकर्शन वापस कंप्लीट हो गया, रिटर्न आ रहे हैं, तो हम लोग ग्रिड के वैल्यू को वापस से अपडेट कर देंगे, मतलब उसके बैक टू इट्स नॉर्मल वैल्यू, बैक टू इट्स प्रीवियस वैल्यू। ये करना ज़रूरी है बिकॉज नेक्स्ट रिकर्शन में हमें उसका ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट, वी नीड द ओरिजिनल वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट रिकर्शन, ओके। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हमें ऐसा ही करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर प्लस इक्वल टू मैक्स आई कर देना है, बिकॉज हमें एक मैक्सिमम मिल गया है और हम लोग आंसर को कंप्यूट करते जा रहे हैं। फाइनली रिटर्न आंसर, ठीक है। एंड दिस whole code is being done entirely for all the values of, ठीक है, for all the weak cells।
Yes, Nipun, I'm coming back to fourth. हाँ. So third problem is done. टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. बाहर के ये तो एन स्क्वायर लग रहा है, ठीक है. रिकर्शन क्या करेगा? चार डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड रिकर्शन. सो बेसिकली व्हाट डू यू थिंक इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम? अंदर भी बेसिकली एन स्क्वायर लगेगा बिकॉज सारे वैल्यूज को एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग, राइट. एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर होगा. सो देयर आर एट मोस्ट 24-25 सेल्स कंटेनिंग पॉइंट्स. कूल. फिर ओके, चलो let's move to the fourth problem then. This problem is inspired by a recent Atlassian interview. Okay. So the three problems are already done. We have around 31 people in the, let me see कितने लोग हैं live stream में. We have around 32 people in the live stream. So uh, so can anyone who has already solved, एक मिनट इसको refresh कर लेता हूँ, who has solved this particular problem write their approach. एक बार describe कर देना क्या approach लेके तुम लोगों ने solve किया है in the chat box, ठीक है. 492 plus submissions है, 5.48% accuracy. Okay. 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 Do write in the chat box and give me just 1 minute of break, and I'm coming right back in. Okay, hi, I am back. I just needed a water break. Cool. So question a bit tricky one. कोई बता दो यार. Okay. Let's see फिर. चलो ये थोड़ा अच्छे से समझना. So the question says that हमारे पास दो स्ट्रिंग है A1 A2, ठीक है. एक वेक्टर A1 A2 और टू वेक्टर्स विच कंटेन्स लेट्स से n स्ट्रिंग्स, ठीक है. n A1 A2 में n स्ट्रिंग्स है, ठीक है. So basically what this means that हमें the task of the question is we have to check that each of the string contained in A1 and A2 are such कि तुम उस string को A1 वाले string को तुम A2 में convert कर सकते हो या नहीं, ठीक है. That is A1 of I को तुम्हें convert करना है A2 of I में, ठीक है. अगर possible है in that case answer of I will be equal to 1, otherwise else आंसर ऑफ आई विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. अगर कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम बॉयल डाउन होता है सिंपल प्रॉब्लम में. यू आर गिवन टू स्ट्रिंग, मान लो एस दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, दो स्ट्रिंग तुम्हें दिया हुआ है एंड यू हैव टू सी दैट यू कैन कन्वर्ट वेदर यू कैन कन्वर्ट एस टू टी और नॉट, ठीक है. So I first try to do option 1 as much as I can, then find GCD of frequency of A2 as k and try to match the largest character with the least character present in that frequency table of A1. If
समवॉट यही कंसेप्ट यूज करना, इफ यू डोंट टेबल नॉट एनी क्लियर मैचेस रिटर्न फॉल्स और ट्रू इन लास्ट। हाँ यार, ऐसे ही अप्रोच है। टेली तो नहीं आना चाहिए, समवॉट सिमिलर अप्रोच है। एक बेस केस है साथ में, तो एक केस है साथ में, वो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी निकालना है, जीसीडी निकालना है, ये दो चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो लाइक दो तीन ऑब्जर्वेशन है साथ में, आई विल टेल द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट, सो बेसिकली प्रॉब्लम बॉयल डाउन किस पे हुआ कि देर आर टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, ओके, एंड यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग एस टू गिवन स्ट्रिंग टी, ठीक है, ठीक है, एस टू टी। ओके, तो यू हैव टू गिवन टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम एस टू टी, ठीक है। ये बॉयल डाउन होता है प्रॉब्लम। चलो, अब क्या ऑपरेशन है? पहला ऑपरेशन है यू कैन स्वैप एनी टू कैरेक्टर, सिंपल ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन है कि तुम एक सबस्ट्रिंग चूज करो, ठीक है, ऑफ लेंथ के, ठीक है, पहले तुम एक लेंथ के का वैल्यू चूज करो, प्री डिटरमाइन कर लो उस वैल्यू को, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो मतलब अगर हो सकता है कि तुम दो के का वैल्यू टू चूज करो, तो हर दो कैरेक्टर को तुम मूव कर रहे हो, राइट। हाँ, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, एक चीज़ समझो। यहाँ पर क्या लिखा है, इन ith टास्क we aim to make a of I as same as a to I by applying operation with a predetermined and fixed value of k, ठीक है। तो choose any substring of length k where all the characters of the string, ठीक है। तो बेसिकली हम तुम अगर k का वैल्यू पहले डिफाइन कर ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद ही तुम ये ऑपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दिस थिंग हैपेंस, ठीक है। इसीलिए हम लोग जीसीडी ले रहे हैं, ठीक है। अगर के का वैल्यू देखो, के का वैल्यू क्या है कि सबस्ट्रिंग का लेंथ सेम रहेगा, ठीक है, और सबस्ट्रिंग का लेंथ अगर सेम रखना है हमें, दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग जीसीडी, ठीक है। जीसीडी का मतलब क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर आ रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यह है कि अगर हम स्वैप कर रहे हैं एनी टू वैल्यूज, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, इफ अगर हम लोग स्वैप कर रहे हैं टू वैल्यूज, इट मीन्स दैट वी कैन ब्रिंग एनी टू कैरेक्टर्स एट एनी प्लेस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट कैरेक्टर को फर्स्ट पे लेकर आओ, तुम स्वैप करते 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 लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो वो इशू नहीं है, स्वैपिंग इज एक्चुअली अ गुड थिंग, ठीक है। आई हैव रिटन अ फ्यू ऑब्जर्वेशन इन स्लाइड्स यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन है कि वी आर नॉट सपोज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ मूव्स, ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स पता करना है, वो सब नहीं करना है। हमें बताना है कि वेदर इट्स अ यस और अ नो, ठीक है। वी हैव टू से वेदर इट्स अ यस और अ नो। अगर ऐसा है, सो इन दैट केस वी हैव टू डू एंड नॉट मिनिमाइज द नंबर ऑफ मूव्स। तो अगर हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स को देखें, सो यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहला स्टेप हो गया कि स्वैप करो 1,2 को, तो पहले 2 A फिर 2 B और 2 C's आ गए। फिर उसके बाद 3 बार इंक्रीमेंट करो, A को B बना दो, दोनों B को C बना दो, दोनों C को D बना दो। सो आफ्टर 4 मूव्स K का वैल्यू यहाँ पर 2 है, वी आर डन विद द प्रॉब्लम। हाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ के फायदा भी नहीं होता एक्चुअली, बिकॉज वी कैन नॉट डू एक्चुअली। हाँ, we can do option 2 only on substring with all character equal. Yes, exactly. So this was the, I think if you miss this particular condition, then hmm. तो इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले, राइट, और हम लोग बेसिकली मैचअप कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसीज के साथ। हाँ, लाइक हाउ इज ए बी बी नॉट कन्वर्टेबल टू सी 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 व्हेन यू कैन डू ए बी 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 सी बी 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 सी 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 सी। हाँ, ए बी बी, okay, so basically you did something like this, b
हाँ, सो बेसिकली यू इंक्रीमेंटेड ए टू बी एंड बी टू सी। ओके, नहीं नहीं, हाँ, सो यस एक्चुअली दिस प्रॉब्लम अगर वो डिफिकल्ट हो जाता, अगर तुम किसी भी दो कैरेक्टर को इंक्रीज करने वाले रहते ना, लाइक इफ यू हैव द लिबर्टी टू इंक्रीज द कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है, टू इंक्रीज द प्रॉब्लम वुड बी वेरी डिफिकल्ट आई सपोज। यहाँ पर दिया हुआ है कि इट शुड बी सेम, ठीक है, द कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी सेम, दैट इज द ओनली रीजन वी आर टेकिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, बिकॉज स्वैप करके हम लोग कभी भी किसी पोजीशन पे ला सकते हैं नंबर को, एनी पोजीशन वी वांट। ओके, तो देखो, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप क्या है, सो वी आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, एंड देन what we will do, we will store the frequency of each character of s in a vector of v1 और t in a vector v2, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ये हमारा कैरेक्टर था, v1 में क्या है, दो बार a है, दो बार b है, दो बार c है, बाकी सारे वैल्यू जीरो। v2 में क्या है, दो a तो एक बार भी नहीं है, बट दो बार b है, दो बार c है, दो बार d है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी दोनों का निकाल रहे हैं, वी कैन ऑलवेज ब्रिंग बैक एलिमेंट्स टुगेदर। देखो इस टाइप का मैच दिख रहा है, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसा होता कि मान लो ऐसा ऐसा होता, तुम्हारा पहला एस होता, एस इज इक्वल टू लेट्स से यही वाला, ठीक है, ए बी सी सी, और टी होता तुम्हारा ए बी सी सी, ठीक है। तो जब तुम इन दोनों का फ्रीक्वेंसी निकालते, दोनों का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम आता, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, तुम्हें इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्वैपिंग से ही काम चला सकते हो। इसको यहाँ स्वैप करो, इसको यहाँ, एक वन स्वैप से काम हो गया, राइट। तो इस केस में क्या होता, तुम्हारा जो बेसिकली होता है, ये सब एक दूसरे के नीचे रहता है, राइट, ये दोनों वेक्टर। अब अगर तुम ये दोनों वेक्टर को ध्यान से देखोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व दीज टू वेक्टर्स केयरफुली, तुम्हें इंट्यूशन मिल जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली आर वी फ्रेमिंग द सोल्यूशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो हम लोग इक्वल लेंथ ऑफ कैरेक्टर को ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे सेकंड स्ट्रिंग में सी है और पहले स्ट्रिंग में ए है, सो ए विल गेट इंक्रीमेंटेड टू सी, तो उसको दो बार इंक्रीमेंट करेंगे, ए टू बी टू सी, ठीक है। तो अगर सपोज हमारे पास पहले स्ट्रिंग में दो बार ए है और सेकंड स्ट्रिंग में सी दो बार है, ठीक है, तो ए को हम लोग सी तक इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ए को हम लोग बी तक इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बी को सी तक इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो द आइडिया इज, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, दिस शुड बी समवॉट सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नीचे वाले में, ठीक है। अगर इस टाइप का फ्रीक्वेंसी टू 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 है और नीचे भी तीन बार टू है कहीं कहीं, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर एक बार एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे तो जीसीडी नहीं बनेगा, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर थ्री 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 होता और यहाँ पर भी नीचे थ्री 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 होता, राइट, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम उस थ्री को तुम यहाँ इस थ्री तक इंक्रीमेंट कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो। आई होप सबको इंट्यूशन चमक गया है, ठीक है। ओके, आई होप एवरीवन हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द इंट्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। बाय दिस टाइम आई गेस सबको अपने मिस्टेक समझ में आ ही गए होंगे क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम था, ठीक है। अब इसको कोड में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं ड्राई रन करवाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोड कोड स्ट्रक्चर पे लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोड को ड्राई रन करने में हालत ख़राब हो जाएगा, बट ओके, विल ट्राई टू डू, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आंसर, ठीक है। आइटरेट करो पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, दो वेक्टर डिक्लेयर करो जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, ये दो वेक्टर फ्रीक्वेंसी स्टोर किया, ठीक है, कूल। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पे चला के रखा है प्रॉब्लम को, सो दिस इज द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। ये कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर, जहाँ पर मैं आई एम रनिंग दिस प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, सो मैं डिबग करता हूँ स्टेटमेंट्स को, ऑटो आई टी इन v1 सी आउट आई टी, ठीक है, और यहाँ पर करते हैं आई टी एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद लेट मी जस्ट कीप ट्रैक ऑफ v2, ओके, ये करते हैं, एक बार रन करता हूँ मैं सिर्फ ये दो स्ट्रिंग को पकड़ के कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ।
ओके सो ओके, यहाँ पर आईटी नहीं लिखना है, यहाँ पर जस्ट हैंडल विल वर्क। तो अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज द 26 कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पर डी की जगह ई कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनपुट में मैं यहाँ पर ई डाल दे रहा, ठीक है, तो अब देखना क्या होगा, आंसर अब नो आएगा, तुम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते उसको। देखो फाइनल वैल्यू 0 आया, ठीक है। ये लास्ट वाला जो वैल्यू है दैट इज वेदर यू कैन कन्वर्ट इट 1 और नो, ठीक है। आंसर देखो 0 आ रहा है। और उससे पहले देखो ये फ्रीक्वेंसी टेबल थोड़ा गलती हो लग रहा है ना, इसको इस 2 को तुम इसमें कन्वर्ट कर दोगे, इस 2 को तुम इसमें कन्वर्ट कर दोगे, बट इस 2 को तुम 2 बार, एक बार डी और एक बार ई में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वॉट एवर यू ट्राई। तो इन दिस केस ये ऐसे चलेगा। ओके चलो, अब सेकेंडली क्या करना है। तो अब तो हमें फ्रीक्वेंसी निकाली है, बट जो इंट्यूशन हम लोग सोचे हैं उसको लॉजिकली कैसे करेंगे। तो लेट मी मेक इट बैक टू डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हम लोग 2 वेक्टर डिक्लेयर करेंगे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पी एन एल, ठीक है। एल क्या कर रहा है, एल हमारा सेकंड, एल हमारा वी टू को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, ठीक है। एल इज ऑलवेज ट्रैवर्सिंग, मतलब वी टू एरे को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पी पे हम लोग V1 का फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जा रहे हैं। तो पहले 2 था तो वो 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे वेदर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 2 इज लेस देन V2 ऑफ L। अगर सपोज वो लेस हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारा पहला कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी 10 है मान लो, और V2 में सेम कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 12 है, ठीक है, ठीक है। V2 में सेम कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 12 है। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, हमें हमें वहाँ से तुरंत ब्रेक करना पड़ेगा लूप से, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है इन दैट केस, हाँ वो आगे समझ जाओगे, ठीक है। ये ब्रेकिंग वाला कंडीशन आई थिंक तुम लोग एंड तक समझ जाओगे। मीनवाइल नॉर्मल कंडीशन में ट्राई करते हैं, मतलब जिससे एक्चुअली में एक आंसर आए, वो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 आया, V2 का वैल्यू अभी भी 0 है, सो 2 इज लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, P माइनस इक्वल टू V2 ऑफ L, 2 माइनस 0 विल बी 2 ओनली, P इज नॉट इक्वल टू 0, टेम्पररी वेक्टर में हम लोग 2 को पुश कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहली बार पहला 2 एंट्री को देख रहे हैं, 2,0 टेम्पररी वेक्टर में 2 पुश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 वैल्यूज प्रिंट करवाए हैं हमेशा, ठीक है। पहला वैल्यूज है, पहला वैल्यू है P, दूसरा वैल्यू है V2 ऑफ L, ठीक है। एक और एंडल स्टेटमेंट डाल देता हूँ जस्ट टू बी क्लियर, ठीक है, फिर से रन करता हूँ। पहला वैल्यू है P और दूसरा वैल्यू है V2 ऑफ L, ठीक है। 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जस्ट टू बी क्लियर, अब शायद क्लैरिटी से तुम्हें डिबगिंग स्टेटमेंट मिल रहा है। तो ये वैल्यू है P का और ये वैल्यू है V ऑफ L का, ठीक है। अब अगर देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरी स्टेप पे इधर ब्रेक कर देंगे या फिर P के वैल्यू को V2 ऑफ L के वैल्यू से डिक्रीज करके फिर जाके टेम्पररी में पुश बैक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस पुट बैक कर रहे हैं। 2 माइनस 0 पुट किया हम लोग P में, 2 माइनस 0 2 होता है, तो टेम्पररी वेक्टर में 2 गया। उसके बाद जो भी वैल्यू है P वो वापस 4 बन जाएगा, ये बेसिकली यहाँ का वैल्यू कैरी ऑन हो जाएगा। फिर 4 माइनस 2 वापस से 2 गया, देखो P का वैल्यू 4 बन गया। उसके बाद दोबारा से हम लोग उसको डिक्रीमेंट कर देंगे तो वापस से 4 बन गया, फिर से 4,2 आंसर आया। उसके बाद वापस से 2,2 आया, बिकॉज इफ़ यू लुक हमारा यहाँ पर 2 है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं, सो 0 ऐड विल नॉट मेक एनी सेंस। तो आइडिया क्या है, हमारा जो टेम्पररी वेक्टर है, टेम्पररी वेक्टर के अंदर क्या गया वो देखो ध्यान से। टेम्पररी वेक्टर के अंदर 3 बार 2 गया है। 3 बार 2 जाने का क्या मतलब है टेम्पररी वेक्टर के अंदर, टेम्पररी वेक्टर के अंदर 3 बार 2 जाने का ये मतलब है कि हमें k का वैल्यू 2 है और हमें 3 इंक्रीमेंट करने हैं, ठीक है। टेम्पररी वेक्टर क्या कर रहा है, टेम्पररी वेक्टर इज सेइंग दैट हाउ मेनी इंक्रीमेंट्स वी नीड एंड ऑफ व्हाट लेंथ, ठीक है। ये बेसिकली फंडा है टेम्पररी वेक्टर का। और टेम्पररी वेक्टर जो है उसमें सारे वैल्यू सेम होंगे, वही वैल्यू ऑफ के होगा। अगर सेम नहीं हो रहे तो जीसीडी हमारा बेसिकली जीसीडी विल गेट लाइक जीसीडी 1 आ जाएगा, राइट। तो वी डोंट वांट दैट, ओके।
लेट्स हैव अ लुक इन द चैट बॉक्स एक बार. ओके कूल. ठीक है. आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, जब टेम्पररी वेक्टर आ गया, एट द सेम टाइम हम लोग एल प्लस प्लस करते जा रहे हैं. ठीक है. सो एल प्लस प्लस बेसिकली मीन्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वी टू. इस लूप के चलने के बाद एल का वैल्यू 26 होना चाहिए. ठीक है. अगर वो 26 नहीं हो रहा है, लाइक 25 नहीं हो रहा, लाइक 0 से 25. ठीक है. तो हम लोग आंसर जे इक्वल टू 0 कर देंगे, बिकॉज पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, कहीं ना कहीं ब्रेक कर गया था बीच में. अगर ब्रेक कर जा रहा है दैट मीन्स दैट वी कैन नेवर मेक इट इक्वल. तो विल डू इट 0. अगर सपोज ब्रेक कर भी जा रहा है, बट पी ऑफ वी वन ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू वी टू ऑफ एल. ठीक है. अगर ये इक्वल टू हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस हम लोग अंदर आएंगे, फिर आगे चेक करेंगे. बट अगर ऐसा इक्वल टू नहीं हो रहा है, तब भी आंसर इक्वल टू 0 कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली मेकिंग श्योर दैट जो लास्ट वैल्यू ऑफ वी टू बचा और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वी वन एल जहाँ पर एंड किया, क्या हम लोग डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट को उसके एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं, इन दैट केस इट मीन्स दैट वी कैन एक्चुअली वी हैव अ चांस ऑफ हैविंग अ आंसर. फिर फाइनली दिस इज द इजीएस्ट पार्ट. अगर टेम्पररी वेक्टर का साइज 0 है, इसका मतलब आंसर फॉर श्योर है. ठीक है. हम लोग कुछ भी डाल ही नहीं पाए अंदर, इसका मतलब स्वैप करने से पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है. सो दिस कंडीशन मीन्स दैट स्वैपिंग अलोन इज नेसेसरी. स्वैपिंग अलोन इज सफिशिएंट टू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. ठीक है. अगर इसका वैल्यू 0 है. अब अगर ऐसा नहीं है, तब जाकर हम लोग जीसीडी निकालेंगे. ये सिंपल कोड है टू कैलकुलेट द जीसीडी. अगर जीसीडी 1 हो रहा है, इट मीन्स दैट टेम्पररी वेक्टर में जो वैल्यूज है दे आर डिफरेंट एंड इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली. फिर और अगर नहीं है, इन दैट केस इट्स पॉसिबल. पॉसिबल फॉर कन्वर्जन. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर कोड. लेट्स सबमिट. I hope everyone have understood this problem. Okay, cool. फिर all the 4 problems are done. Do you guys need the code in the chat box? Uh, like पहला 3 problems are pretty easy. तुम लोग को solution already मिल जाएगा submissions पे actually. If you go for a submission and see my submission. ठीक है. my यहाँ पर all submissions जाना. मेरा submission ये वाला है. Right now I just did the submission. ठीक है. So in that case I'm just signing this particular copy, pasting it here. I think पूरा कोड नहीं जाएगा. I think it has a limitation. See, chat box थोड़ा गंदा हो गया. Damn. Apologies, please. You can go to the problem statement, see the submissions tab, open the submission tab, see my submissions. Okay, cool. Okay. Okay. Someone is saying, मैं टॉप कर देख लेता हूँ. जावा सोल्यूशन है ये. Refresh. Java is something I'm not very comfortable in, but I will still try. See all submission. ओके. एक एरे 26 का बनाया, पीछे से इटरेट कर रहे हो. 0 कंटिन्यू वाइल सम मॉड के मैन विथ मैन डॉट मैथ डॉट मिनिमम कर रहे हैं. राइट. ओके. एफ ऑफ ए करंट. यार ऐसे तो समझ में नहीं आएगा. लाइक प्रॉपर्ली बैठ के सोचना पड़ेगा इस पर. हाँ, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी अरे बना रहे हो, रेपिटेशन कर रहे हो. लाइक तुमने सोचा तो काफ़ी है. लाइक आई रियली अप्रिशिएट लाइक योर मच हैव थॉट.
और टीएलई आ रहा है इन दैट केस ट्राई टू थिंक किस रीज़न की वजह से आ सकता है। ये वाइल लूप की वजह से आ सकता है टीएलई, बिकॉज देखो एक बार ये वाइल लूप कितना बार रन कर रहा है और क्या रेपिटेशन हो रहा है जहाँ पर तुम्हें रन नहीं कराना चाहिए तब भी ये वाइल लूप रन कर रहा है। उस तरीके से सोचो एक बार। एज सच लाइक वैसे तो ये ऑलरेडी टफ प्रॉब्लम है, तो एंड सेकेंडली एक अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल लॉजिक को, लाइक अपना इंट्यूशन अगर हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे then in that case it is possible, but till then you can just assume that this code is correct. Try to correct your logic by understanding this particular logic. Okay, yeah, let's have a look into time complexity. क्या लगता है क्या होगा? पहले ओ ऑफ एन जा रहा है, राइट? उसके बाद हम लोग ये वाला हर एक वेक्टर पे आ रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है कि एन का वैल्यू 100 है, तो एन तो जा रहा है, लेंथ है 10⁻³ 1000 है, तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, अंदर यहाँ पर एक और पर 1000 ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग पूरा लेंथ को, तो 10⁻³ 10⁵ हो गया। और फिर ये वाला जो है ये आइटरेट कर रहे हैं हम लोग किसके ऊपर? ये आइटरेट कर रहे हैं हम लोग V1 और V2 के ऊपर, राइट? फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 26, तो 26 इंटू 10⁻³ इंटू 100 10⁻², तो 10⁵ का होगा। और कुछ है? हाँ, GCD यूज़ कर रहे हैं, GCD लॉगिन लेता है। हाँ, तो फिर से लाइक बट यहाँ पर एन का वैल्यू उतना बड़ा होगा नहीं, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी 26 तक मैक्स जाएगा, तो हम लोग इसको भी ओ ऑफ 1 कंसिडर कर सकते हैं। So 10⁻³ multiply 10⁵ 10⁵ into 26. So it's somewhat like जो भी complexity है 10⁵ के आसपास है, so it will run within 1 second, ठीक है? So अगर हम लोग n के टर्म में बोले, so n into अंदर फिर से जाएगा a of I dot length multiplied with 26. Cool. Cool. फिर let's yeah. Thank you very much for joining everyone. वाइल लूप में एक जगह कंटिन्यू यूज़ किया था, उधर इंडेक्स कम नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है। लाइक लॉजिक तो मुझे ऊपर से सही लग रहा था, तुमने फ्रीक्वेंसी भी निकाला, प्रॉपर्ली चेक भी किया, सब कुछ कर ही रहे थे। लाइक एक्चुअली में जब इंट्यूशन इज एक्चुअली करेक्ट, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से लाइक तुमने काफ़ी सोच तो लिया बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम हो गया, बट दैट डजंट मीन लाइक यू थॉट रॉन्ग इनिशियली, यू थॉट इट राइट। ओके, कूल, बाय बाय।